Okay, in the previous discussion, we discussed about the functions of uh, kidney. Functions of kidney. Now, onward, we are going to start the next discussion that is related to structure and functional anatomy of nephron. Because you people know that nephron is the structural and functional unit of kidney, or you can say, in other words, the renal system. The structure and functional, structural and functional anatomy of nephron. Right? Okay. And uh, all of you know about the nephron. Know about the nephron. We can say that nephron is structure and functional unit of kidney, right? And you can say that this nephron is composed of is composed of renal tubules. Definitely, we will discuss down the road the different segments of the nephron, as already you people know: proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubules, as the name indicates, tubules. So, nephron consists of renal tubules and glomerulus, right? Okay. Next, I am going to draw here the structure of nephron. And listen, almost in जो renal system है उसमें 1 से 1.3 million nephron are present in each kidney. Okay. Now I am going to draw the whole structure of nephron. You people have to draw with me. Okay, this is I am going to draw the loop of Henle. This is the loop of Henle. Okay. The next portion is distal convoluted tubules. Okay, this portion is DCT.
These are the collecting ducts. Okay, I will label it later on. Okay, now I am going to label it. This is Bowman's capsule. This is Bowman's capsule. Bowman's capsule. Right? Okay. This is glomerulus. ये क्या है? Glomerulus. Okay. The the arteries, those are going to enter the Bowman's capsule. ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं, these upper arteries are efferent arterioles. Efferent arterioles, right? And those arteries leaving the Bowman's capsule are efferent arterioles, or efferent efferent arterioles, right? Okay. The portion just after the Bowman's capsule is proximal convoluted tubules. This portion, proximal convoluted related tubules. Okay, or you can also call it as PCT. Call it as PCT, mean proximal convoluted tubules. Okay. The next portion is loop of Henle, and loop of Henle is again divided into different segments. The first portion, right after the proximal convoluted tubule, is thin descending loop of Henle. This is thick, thin descending loop of Henle. Okay. This portion is thick ascending loop of Henle. Thick ascending ascending loop of Henle. Okay. You can also write it as TAL, thick ascending loop. And this one is thin descending loop. Okay. And the next portion is distal convoluted tubules, or you people can also say it or write it DCT, distal convoluted tubules. Okay. The next portion is collecting ducts. The next portion is collecting ducts. Right? Okay. Now listen. नो लिसन, आपको पता है ना कि जो हमारा किडनी होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक क्या होता है कॉर्टेक्स, और एक क्या होता है मेडुला।
कॉर्टेक्स एंड मेडुला। फिर जो मेडुला है उसके फिर आगे दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। Okay, and medulla is again further divided into two parts: outer medulla, outer outer medulla, and inner medulla. Okay, now listen. ये जो listen, जो जिस जो मैं लाइन लगाने लगा हूँ, listen, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लगाई है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन अदर लाइन। ठीक है, तो ये दो मैंने दोनों लाइन लगाई। ठीक है, अब गौर से सुनो कि ये जो ऊपर वाला एरिया है कौन सा, वुमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, यहाँ तक, ये आप लोग कह लो कि ये कॉर्टेक्स में होता है या कॉर्टिकल रीजन में होता है। किधर होता है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल रीजन और कॉर्टिकल रीजन में। ओके, फिर इसके बाद जो स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉरी, इसके बाद जो स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं आउटर मेडुला। उसको क्या बोलते हैं? ये इतने वाला पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? आउटर मेडुला, क्योंकि कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? मेडुला। मेडुला इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर। तो राइट आफ्टर द कॉर्टेक्स इज आउटर मेडुला एंड आफ्टर आउटर मेडुला इज इनर मेडुला। दैट इज आउटर medulla, and the next portion is in inner medulla. Inner medulla. Okay, is there any query? I will take it later on. अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी हमने देख लिया चीजें। ग्लोमेरुलस देखा है, बुमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, आउटर मेडुला, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब कुछ बातें मैं लिखने लगा, वो भी आप लोगों ने नोट करनी है। ग्लोमेरुलस, लिसन एंड रिमेंबर, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस Bowman's capsule plus Bowman's capsule are collectively known as collectively known as renal corpuscles। क्या बोलते हैं इसको? renal corpuscles। okay, renal corpuscles। Next point is the glomerulus is 200 micrometer in diameter। okay,